रंगने पसंदी के बाद आपने दोबारा इस तरह से एक अतीत की बहुत खूबसूरत सी कहानी को वर्तमान के साथ जोड़ा है। ऐसा करते हुए एडिटिंग टेबल पे आपको खुद से लड़ाई करनी पड़ती है क्या? ये सवाल एक्चुअली लाइट क्यों कम किया? यार लाइट प्रॉपर नहीं है यार। आजकल का जो सिनेमा है और उसका जो ग्रामर है, मैं आपको थोड़ा विस्तार में बता दूं अगर 2 मिनट हैं तो। क्या है, कैमरा फोटोग्राफी से आया, एक्टिंग थिएटर से आया, राइटिंग तो राइटिंग से है, संगीत की दुनिया से, क्लासिकल फोक एंड ऑल दैट। एक एडिटिंग ही ऐसा आर्ट फॉर्म है सिनेमा जो सिर्फ सिनेमा की वजह से आया। ये सिर्फ 100 साल पुराना है और ये दिस इज द मोस्ट कहते हैं ना द बेबी आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। हम सब मिलके बनाते हैं, कोलैबोरेटिव आर्ट। तो एडिटिंग अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आजकल सब डिजिटल हो गया है, तो हम स्टोरी को नॉन लीनियर भी बोल पा रहे हैं। मतलब पहले बिगनिंग से शुरू करते थे, 1 2 3 4 से 10 तक जाते थे, अब 2 से 12, 12 से ये। एट द सेम टाइम हम आपके ख्यालों में भी घुस सकते हैं कि बाजे वक्त आप ट्रेन में बैठी हैं बट आपको याद अपने बचपन की आ रही है, तो वी कैन आगे पीछे वो दोनों स्टोरियाँ चला सकते हैं। तो बहुत सिनेमा के जगत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ये सिर्फ 100 साल पुराना आर्ट फॉर्म है। आगे चलेंगे तो अभी वर्चुअल और ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी और ये सब आने वाला है। एडिटिंग तो फिर पीछे रह जाएगी। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2 कहानियाँ और बहुत खूबसूरत कहानियाँ, उन्हें जोड़ते वक्त आपको बहुत खूबसूरत से जो दृश्य आपने या गुलजार साहब ने लिखे होंगे वो काटने पड़ते होंगे, तो उस वक्त आपका अपने से ही एक वो होता होगा, द्वंद्व होता है कि ये चीज़, क्या चीज़ रखूं और क्या चीज़ छोड़ूं, खासतौर पे जब गुलजार जी हो। मतलब इतनी प्यारी स्क्रिप्ट हो, फिर उसको आप सब लोग मेहनत से काम करते हैं और उसको शूटिंग करते हैं और बहुत मटेरियल होता है हमारे पास, और बट एंड में जो कहते हैं कि फिल्म टेबल पे बनती है, एक फिल्म का स्क्रीन प्ले कभी ख़त्म नहीं होता। एक लिखा जाता है, एक शूट किया जाता है, फिर एक्टर्स उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, डायरेक्टर अपनी तरह से, म्यूज़िक डायरेक्टर्स अपनी तरह से, कैमरामैन, फिर एडिटर के पास जब वो पहुँचती है बात, तो वो अपनी तरीके से इंटरप्रेट करती हैं उन्हें, और फिर वो उस कहानी को वैसे बताते हैं। तो स्क्रीन प्ले बार बार लिखा जाता है और जब ऑडियंस देखती है, हर एक ऑडियंस का मेंबर उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। Thank you for your question. Hi, this is on your right, Rakeysh ji, Sohail from Glamshan. Congratulations to the entire team and it was a great launch. मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि मिर्ज़ा और साहिबा की जो कहानी है पहले की, और आपने आज उनको रिलेट करने की कोशिश की, हर्षवर्धन को आपने ऐसे नहीं सोचा कि उनके फिजिक्स पे थोड़ा वर्क कर दिया जाए, मतलब यू नो विद हैविंग सम मसल्स आल्सो, दैट थॉट हैड कम इन योर माइंड? कुड यू टॉक एंड हर्ष आल्सो? हर्ष से पूछा जाएगा कि वो अपने डैड की तरह ही, यू नो, लाइक he also has maintained himself. नीचे बैठना। Okay, the character of this film, I think we got too used to these 6 packs these days. Number 1. No, ये भेड़चाल जो है। Number 2, Mirzya's character was not that of a boxer. Neither. So Harsh has given me 18 months. Now hear me out. Since we are talking about prep, 18 months before the shooting. Don't get me wrong. In that he has worked on the role of first the contemporary character, which is Munish in the film. So for them, in their first film, they are actually doing double roles in their first debut film. And that character required a certain physicality. Correct? Then after finishing that, we took a 7-month break because they had to prepare in a different way for another film within a film for another character to be in a different zone altogether. It's not easy, and in your first film. For 6 months they prepared again. There is something called horse riding and mounted archery. If you study that, when you are a horse rider, you got a very lean and athletic look about you. You don't have a 6-pack look about you and all that. So I'm sure when we make a movie about
a boxer will satisfy you. हर्षवर्धन यहाँ मेरा सवाल आपसे है, जब आपने पहली बार ये स्क्रिप्ट सुनी आपका रिएक्शन क्या था? First of all, we actually met in 2008, I think, and we kept meeting every couple of months after that. And at the time, Rakeysh sir had mentioned that he was working on the story of Mirzya Sahiba, and Gulzar Sahib was writing the screenplay. And I was actually still in college at that time. I was 18, 19 years old. 25 now, so this is a conversation that's been going on for a very long time. And then I went back to college after the first interaction with Rakeysh sir, and I actually did what I could, try to find whatever I could about the story on the internet. And you know, obviously it's a romantic tragedy, and it's very different from the other romantic tragedies because it's the two lovers themselves that make decisions that eventually determine their destiny. You know, so it was very complex, and it was very brief and very vague on social media. So as kind of time went on, we kept reconnecting, and then eventually, I think in June 2013, after talking for like 2 or 3 years, we finally decided that it was the right time to kind of embark on this journey. And until then, I hadn't really heard anything from the script. So then finally I sat with Mehra, and then he narrated about 10 or 15 pages because the script was still a work in progress at that time. And just the beauty that which it was kind of written, because you know, it's very rare these days to find scripts that are very poetic and very romantic. And I think for me, you know, I read it when I was 22, and I was reading so many other romantic stories and scripts, but I think that this is the most contemporary romantic film ever. You know, I mean, at least from what I've read, the interpretation of it. You know, so I was completely blown away. You know, it's one of those things that you hear it and you're like, I have to, I'll give anything to be a part of this film. You know, I mean, it's romantic, it's complex. You get to play two characters. It's poetic, it's visual, it's musical. So it's like a fever dream. You know, so it's a dream.